Hello, welcome to our channel AAAAS. Learn Excel with Amna. In today's video, we will learn about 6 options in Excel in alignment. So let's start. I will open my Excel workbook now. I told you before, today we will learn about 6 options. The 6 options are top align, middle align, bottom align, align right, center, and align left. So let's start. We will start from top align, middle align, and bottom align. So let's start. Now, if I want my writing to be up or down. Now, what I will do? If I will select all and click on it, nothing will be done over here. You have to select all. Either you have to do, and now you have to only do like height is 30.75. I am done it. So you can see all of rows and column has been bigger to 70.35. Okay, now if I want my writing to top, so you can see your writing has been on top. अगर आपको अपनी लिखाई ऊपर करनी है तो आपने इस बटन को दबाना है. इसका नाम है टॉप अलाइन. Now if you want your writing to in center, click on middle align, so your writing will be in center. अगर आपको अपनी लिखाई दरमियान में करनी है तो इसको सेलेक्ट करें और मिडल अलाइन पे दबाएं, तो देखें आपकी जो लिखाई है वो मिडल पर हो जाएगी, दरमियान में हो जाएगी. Now if you want your writing to be in bottom, so select all. There's an option bottom align, click on it, so your writing will be on bottom. अगर आपको अपनी जो लिखाई है उसको नीचे करना है तो सिलेक्ट करें और यहाँ पर एक ऑप्शन है बॉटम अलाइन, इसको दबाएं तो आपकी राइटिंग नीचे आ जाएगी. So now our next option is left align. Select all, click on it left, so it all already in left side. अगर आपको अपनी लिखाई बाएं तरफ करनी है तो इसको सिलेक्ट करें और लेफ्ट अलाइन को दबा दें. अभी ये बाएं तरफ ही है. If you want your writing to be in center, select all. There's an option center, click on it, so your writing will be moved center. अगर आपको अपनी लिखाई दरमियान में करनी है तो सेलेक्ट ऑल करें और ये सेंटर में दबा दें. सेंटर, इससे आपकी जो लिखाई है वो दरमियान में आ जाएगी. If you are writing to be on right side, select all. In alignment there's an option align right, click on it, so your writing will be moved to right side. अगर आपको अपनी लिखाई राइट साइड पे करनी है तो select all और align right के ऊपर क्लिक करें तो आपकी जो राइटिंग है वो दाएं तरफ आ जाएगी. In our next video, we will learn about how we can rotate our writing and 3 more options. Thanks for watching us. If you have any query, please let me know in comments.